Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Chapter 9. Chapter 9, text number 51. Which Leela? Adi Leela, chapter 9. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Sri Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Okay, what verse? Verse number 51. 51? 5-1? Adi Leela, chapter 9, text number 51. Yeah, this one. Okay. Today is Chaitanya Charitamrita. And this will help us understand the Srimad Bhagavatam. आज सीधा चरितमृत का क्लास है और ये हमें मदद करता है श्रीमद् भागवतम को समझने में. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E Malakara Kaya E Prema Pala. E Malakara Kaya E Prema Pala Nirvadi Mata Rahe Vishvesa Vivala. E Malakara Kaya E Prema Pala Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. E Malakara Kaya E Prema Pala E Malakara Kaya E Prema Phala. Niravadi Mata Rahe Vishwasa Vivala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. E Malakara Kaya E Prema Pala E Malakara Kaya E Prema Phala. Niravadi Mata Rahe Vishwasa Vivala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. E Malakara Kaya E Prema Phala. E Malakara Kaya E Prema Phala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vivala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. E Malakara Kaya E Prema Phala. E Malakara Kaya E Prema Phala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vivala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. E Malakara Kaya E Prema Phala. E Malakara Kaya E Prema Pala Niravadi Mata Rahe Vivesha Vihala. Niravadi Mata Rahe Vivesha Vivala. Anyone else? Maybe they can't remember it. Huh? A. This. Malakara. Malakara. Great gardener. Kaya. Eats. A. This. Prema Pala. Fruit of love of Godhead. Niravadi. Always. Mata. Maddened. Rahe. Remains. Vivasha. As it happens. Vivala. As if bewildered. Translation: the great gardener, Lord Chaitanya, personally eats his fruit, and as a result he constantly remains mad, as if helpless and bewildered. Translation: यह महान माली
श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं, तो स्वरूप में निरंतर उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं मोहग्रस्त हों। Purport by Srila Prabhupada. It is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu to act himself and teach the people. He says, Apani achari bhakti kadila prachar, Adilita 4:41. One must first act himself and then teach. This is the function of a real teacher. Unless one is able to understand the philosophy that he speaks, it will not be effective. Therefore, one should not only understand the philosophy of Chaitanya, but also implement it practically in one's life. श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य ही है कि अपने आश्रम द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाए। वे कहते हैं, अपनी आचार्य भक्ति कलिला प्रचार, चरितमृत आदिलीला 4 अध्याय 41वां श्लोक। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं आश्रम करना चाहिए तथा शिक्षा देनी चाहिए। असली शिक्षक का यही कार्य है। जब कोई इस सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, जब तक वह स्वयं उसे नहीं समझता, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को न केवल चैतन्य संप्रदाय के दर्शन को समझना होगा, अपितु अपने जीवन में उसे उतारना भी होगा। Okay, so this verse, it's mentioned, Adilita 4. महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते कभी-कभी मूर्छित हो जाते हैं। What does it say? और घंटों बेहोश पड़े रहते हैं। Did it say Adilita 4:41 or 42? It's 51. There's a reference in the purport. It's 4:41. That's what I'm asking. Because I went for that, but it came up 42. Emata bhakti bhavi angikara apani achari bhakti kadila prachara. In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. जब हमें पहले खुद प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति का, उसके बाद लोगों को भक्ति के बारे में बताना चाहिए। Purport. When Prabhupada references another verse in the purport, I always look up that verse. Because it's very important. It's part of the purport. Rupa Goswami met Lord Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, Allahabad. He offered his respectful obeisances by submitting that Lord Chaitanya was more magnanimous than any other avatar of Krishna because he was distributing love of Krishna. This is something I could never understand. If I'm speaking, the translator is just translated. If I read a verse, they can't translate it unless they see it in writing. All the translators. It's a phenomenon. You find it? See, yeah, that's why when Rupa Goswami met Lord Chaitanya at Prayag, जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मिले, he offered his respectful obeisances उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए, by submitting that Lord Chaitanya was more magnanimous than the others बता दें कि जो चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा कृपालु हैं, because he was distributing love of Krishna. क्योंकि वो कृष्ण प्रेम सबको बांट रहे हैं। Now everybody knows that verse, I hope. ये वर्ष आप सभी को पता है। Namo Maha. Okay. His mission was to enhance love of Godhead in the human form of life. The highest achievement is to get the love of Godhead. ये सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ा जो कर्तव्य था, मिशन था कि भगवान का प्रेम सभी को दे दिया जाए। Lord Chaitanya did not invent a system of religion. चैतन्य महाप्रभु ने धर्म का कोई नया शाखा नहीं शुरू किया। Like some people think.
जैसा कि सभी लोग सोचते हैं, Religious systems are meant to show the existence of God. जो धर्म का जो सिद्धांत है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे लोगों को बताया जाए, Who is then generally approached as the cosmic order supplier. जिसका अप्रोच होता है कि जो भगवान जो सबको सब कुछ मुक्ति कर रहे हैं उनके बारे में बताया जाए। God, give me this, give me that. जो भगवान मुझे ये दीजिए, भगवान मुझे ये You are दीजिए, very भगवान rich, मुझे I ये am दीजिए। poor. I'm giving you 100 rupees, please give me 1 crore. One, This is how people are thinking. कि लोग बोलते हैं कि आप You are very rich, my dear Lord. I am very poor. I'm giving you 100 rupees. You please give me 1 crore rupees. ओके, बोलते हैं कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपये दीजिए। Right? It's nothing for you, right? This is how people pray. इस तरीके से लोग जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से। It's called artha, right? इसको हम अर्थ बोलते हैं, Artha, kama. अर्थ और Do काम। some religious activity to ask for बस ये something. धर्म का कोई एक वो कार्य है। Lord Chaitanya's transcendental mission is to distribute love of Godhead to anyone. चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य कार्य है कि वो भगवान का शुद्ध प्रेम सभी को दें। Anyone who accepts God as the Supreme can take to the process of chanting Hare Krishna and become a lover of God. अगर कोई देखता है कि जो भगवान कृष्ण है वो परम भगवान है तो उनसे जो है शुद्ध प्रेम से उनका भक्ति करे। Therefore, Lord Chaitanya is the most magnanimous. इसी चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत 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 कृपालु है। This munificent broadcasting of devotional service is possible only for Krishna himself. वो कृपा करके सभी जगह प्रचार कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त कीजिए। Therefore, Lord Chaitanya is Krishna. इसीलिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। In Bhagavad Gita, Krishna has taught the philosophy of surrender to the personality of Godhead. इसलिए भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो है आप परम भगवान को शरणागत रहिए। One who is surrendered can make further progress by learning to love Him. अगर कोई भगवान को शरणागति जाता है तो वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। Therefore, the Krishna consciousness movement propagated by Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Lord. इसीलिए क्या चैतन्य महाप्रभु जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया ताकि सभी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। The ultimate controller of everything. वही जो है जो सब कुछ को नियंत्रित करने वाले अंतर्गत वही हैं। His mission is to teach people how to dovetail themselves into engagements of transcendental loving service. इसलिए वो सभी को प्रचार कर रहे हैं कि आप जो है आप भी इस मिशन में सहयोग कीजिए और जुड़िए। Does anybody know what dovetail is? Prabhupada uses that word a lot. How does it translate in Hindi? Prabhupada uses it a lot. So it must be common in India because it must be in the translation. That means it's very very komal, very soft. Huh? Very soft. No. Dove is a bird. It's like a pigeon. It's a bird, the dove, and it has a tail. Just translate what I say. I'm telling you what it means. It's important. You know, Prabhupada wrote it. See, if you come across a word you don't know, get the dictionary and look it up. Otherwise, you miss the whole page by one word. If you just, skip the word that I don't know. No. Stop and look it up in the dictionary. If you listen to Vaisheshika Prabhu's classes, he's always saying, what's the origin of that word? Who's got the dictionary? What does it mean? So we know what it means. I'll tell you what it is. The dove is a bird.
जो डक है किसी पंछी का नाम है। It's like a pigeon. We know pigeons. कबूतर होता है। Plenty of pigeons over here, right? So they have a tail. The tail goes like this. जो उसका जो पूंछ है वो खड़ा पीछे से खड़ा हो जाता है। But all the feathers come into one point. लेकिन उसके बाद क्या है कि जितनी उसकी पंखुड़ियां हैं वो सब एक जगह एकत्रित हो जाता है। So in America, it's a construction term. Probably here also. ये जो है ये जो जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस समय इस टर्म को यूज किया जाता है। You know, you build a roof or something and they put all the beams. जब हम छत बनाते हैं तो उसका लोड एक पॉइंट पे देते हैं। So Prabhupada is saying you dovetail everything you do, you put it to Krishna. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं Becomes all ends up at आप कोई Krishna. भी कार्य करते हैं तो उसको सब कृष्ण के प्रति दीजिए। Not that, you know, this work is going here, this one's going there, this one's going there. No, everything's coming to Krishna. That's what it तो means. उसमें क्या है कि कोई कुछ लोग इधर जा रहे हैं कुछ लोग उधर जा रहे हैं कि सब कुछ जो है कृष्ण के प्रति होना चाहिए कृष्ण Okay. एक पॉइंट पे। Dovetail. उसी को हम डकटेल करते हैं। You can find out how it goes in Indian. Dovetail themselves into engagements of transcendental loving service. तो जो डकटेल जो है वो हमें भगवान के दिव्य कार्यों में लगाना चाहिए। Here's Krishna teaching his own service from the position of a devotee. तो कृष्ण जो है वो एक भक्त की जगह पे सब कुछ बता रहे हैं। The Lord's acceptance of the role of a devotee in the eternal form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is another of Lord's wonderful features. चैतन्य महाप्रभु हैं उनका बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ बता रहे हैं। A conditioned soul cannot reach the absolute personality of Godhead by his imperfect endeavor, and therefore it is wonderful that Lord Sri Krishna, in the form of Lord Gauranga, has made it easy for everyone. चैतन्य महाप्रभु हैं वो गौरांग महाप्रभु के रूप में हैं और वो हम सबको जो भी कंडीशन सोल है उसको बताने की कैसे आपको भगवत प्रेम प्राप्त करना है। This is a long purport. Does he have a Hindi translation? बद्धजीव अपने पूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतः यह अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया है। दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण अथवा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है। भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए। तथापि भक्तों का एक वर्ग जो There's much more. नदिया नागरी या गौर नागरी नाम से जाना जाता है। यह नकल उतारता है कि उनमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपियों का भाव है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अपितु भोग या कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान नहीं है। गौर नगरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में बाधक ही हैं। भगवान चैतन्य निस्संदेह श्री कृष्ण हैं और वे सदैव श्रीमती राधा रानी से अभिन्न हैं, किंतु भगवान ने जिस विप्रलम्भ भाव को गुण कारणवश धारण किया उसे सेवा के नाम पर छोड़ना नहीं चाहिए। संसारिक व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा
सतर्क रहना चाहिए। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वह उपद्रव खड़ा करे। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, भक्ति तो अनुकूल्य न अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है, कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था। मनुष्य को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार की है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में पुरी में वह कमरा जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे किया, वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते रहते जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे। किंतु वे गौर नागरिक जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भोक्ता और अपने आप को उनके भोग के स्थान में रखते हैं, न तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है न उनके अनुयायियों द्वारा। नकल करने वाले इन मूर्खों को आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ये पूर्णतया अलग बढ़ जाते हैं। इनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों से नहीं मिलाया जा सकता। Okay, dovetail in Hindi is tafasil. It's like सभी को एक जगह जोड़ देते हैं। Tafasil. So it's same thing I said. So you see that was an extremely long purport you just read. So rather than rewrite it all again, Prabhupada puts in reference as explained in this verse. So you should always look up there's so many, sometimes many references in one purport. So if you want to understand the purport, then we should look up the reference. If you have the database, it's very easy. Recommended for everybody. Just push the button and it goes to it. Push another button, it goes back. You don't have to go to the bookshelf and get the books down. Because we don't, this is, Kali Yuga has made, giving us a lot of advantages with this technology. But we have to be careful to use it right. It's dangerous. So for the sake of the English speakers here, Swarup Damodar has described Lord Chaitanya as Krishna in the attitude of Radharani, or you already read it, so a combination of Radha and Krishna. The intention of Lord Chaitanya is to taste Krishna's sweetness in transcendental love. He does not care to think of himself as Krishna because he wants the position of Radharani. We should remember this. The class of so-called devotees, called the Nadia Nagaris or the Gora Nagaris, pretend that they have the sentiment of gopis toward Lord Chaitanya, but they do not realize that he placed himself not as the enjoyer, Krishna, but as the enjoyed, the devotee of Krishna. The concoctions of unauthorized persons pretending to be bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. Presentations such as those of the Gora Nagaris are only disturbances to the sincere execution of the mission of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is undoubtedly Krishna himself, and he's always non-different from Srimati Radharani. But the emotion, technically called Vipralamba Bhava, which the Lord accepted for confidential reasons, should not be disturbed in the name of service. A mundaner should not unnecessarily intrude into affairs of transcendence and thereby displease the Lord. One must always be on guard against this sort of devotional anomaly. A devotee is not meant to create disturbance to Krishna. As Srila Rupa Goswami
has explained, devotional service is anukulyena, favorable to Krishna. Acting unfavorable toward Krishna is not devotion. Kamsa was the enemy. He always thought of Krishna, but as an enemy, one should always avoid such unfavorable. Lord Chaitanya has accepted the role of Radharani, and we should support that position. And Swarup Damodar did in the Gambhira, the room where Lord Chaitanya stayed in Puri. He always remembered Lord Chaitanya. He reminded Lord Chaitanya of Radha's feelings of separation as they are described in the Bhagavatam, and Lord Chaitanya accepted this help. But the Gauranagaris, who place Lord Chaitanya in the position of enjoyer and themselves as enjoyed, are not approved by Lord Chaitanya or by his followers. Instead of being blessed, the foolish imitators are left completely apart. Their concoctions are against the principles of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The doctrine of transcendental enjoyment by Krishna cannot be mixed up with the doctrine of transcendental feelings of separation. So this is a particular, they're not always so long, the references. This one's particularly long. Okay, so now we're on what chapter? What verse were we on before? We are on chapter 9, text number 51. Okay. Adilila. This program doesn't go back so easily. We almost finished that purport. While chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he sometimes fainted and remained unconscious for many hours. चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते कभी-कभी होश में रहते थे और घंटों बेहोश पड़े रहते थे. He says in the Shishastak, Yugai tam nameshena chakshusha pravishayana sunyai tam jagat sarvam govinda virahename. इच्छा से कम उनकी प्रार्थना है विवाहितम निमेषेन चक्षुषा प्राविष्टायतम तुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेणमे. O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing by my eyes like torrents of rain, and I'm feeling vacant in the world in your absence. हे गोविंद, आपके बिना में मुझे एक क्षण 12 वर्ष या इससे भी अधिक लगता है. मेरी आंखों में वर्षा की बौछारों इस समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है और आपकी उपस्थिति में मुझे लगता है मुझे ये जगत बिल्कुल शून्य लगता है. Prabhupada, the word is yugai, that it's like a yuga. Prabhupada translated 12 years, but the word is yuga. How much is a yuga? How many years? 12 years. No, yuga is not 12 years. Kali Yuga is 420,000 years. And usually when you say yuga, it means Maha Yuga, all 4 H's. But nobody would have been able to catch that. So Prabhupada just said 12 years to us, which sounds like a really long time. But it is like one chan, Hmm? like 1 second. 1 second is like 12 years. Chan is like Yeah, but 12 years पर बात से जो 1 second. Chan कितना period होता है? anyway, it's not literally 12 years. A yuga is millions of years. Yes. I don't know why you can't catch these things. But, Prabhupada's expert. If he would have said, like an entire age, nobody know what that means in the English-speaking people that never heard anything. But if you say 12 years, they can relate to it. That's how Prabhupada made everything available to us, by translating in that way. Not always literal translation. So some scholars will say, well, no, but the Sanskrit's this, Prabhupada. No, he was making it, he was translating in a way that we could understand it. This is the perfectional stage of chanting the Hare Krishna mantra.
and eating the fruit of love of Godhead, as exhibited by Chaitanya Mahaprabhu. ये पूर्ण अवस्था है जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा भगवत प्रेम रूपी फल की खाने से मिलती है, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है। One should not artificially imitate this stage, मनुष्य को इस अवस्था को कृत्रिम रूप से नकल नहीं करनी चाहिए। but if one is serious and sincerely follows the regulated principles and chants the Hare Krishna mantra, the time will come when these symptoms will appear. किंतु यदि वह गंभीर है और नियमों का निष्ठा से पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है, तो वह घड़ी आएगी जब ये लक्षण प्रकट होंगे। Tears will fill his eyes and he will be unable to chant the mantra distinctly. उनकी आंखों अश्रुपूरित हो उठेंगी, वह महामंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकेगा। His heart will throb in ecstasy. और भवोदेश में उसका हृदय स्पंदित हो उठेगा। Lord Chaitanya says that one should not imitate this, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, but a devotee should wait and want that to happen. किंतु भक्त को ऐसी कामना करनी चाहिए कि वह दिन आए जब ऐसी समाधि के लक्षण हमारे शरीर में स्वतः प्रकट हों। Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swaminiti Namah Namaste Saraswati Devi Gauravane Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane. Anyway, very lot is there. Lord Chaitanya, it's a very nice chapter how he's the gardener. ये चैतन्य महाप्रभु का जो इस अध्याय में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। And he's the root of the tree of devotional service, and there's branches and sub-branches. And ये जो अध्याय है, ये चैतन्य चरितामृत का जड़ है, उसके बाद ब्रांच है, उसके बाद सब ब्रांच है। and Iskcon is one of the branches. जो इस्कॉन संस्था है, वो चैतन्य महाप्रभु का एक शाखा है। The main branches are Nityananda and like that. Yeah. जो मेन शाखा है, वो चैतन्य प्रभु है। Then he's saying that there's so many fruits of love of Godhead, and he can't eat all of them. There's too many. जो भगवत प्रेम का जो फल है, वो चैतन्य महाप्रभु उसको पान करते हैं। So at one place he's saying that I demand that every man, woman, and child in the universe help him to distribute these fruits of love of Godhead. एक समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जितने भी माता पिता बच्चे सब हैं, सब जो है इस भगवत प्रेम को बांटने में हमारा सहयोग करें। So what are those fruits? वो फल क्या है? Who knows? किसको पता है? Anybody know? आप सभी में किसी को पता है वो फल? Love of Godhead. Yeah. What are the fruits of love of Godhead? The fruit of the tree is it's not a tree, it's a mango is a fruit of the tree. The tree is different. Your fruits of love of Godhead. Prabhupada's love. All of you. जो हमारा प्रेम है वो है भगवत प्रेम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो फल है वो क्या है? And Prabhupada's books. उनका जो Those फल are है, fruits of प्रभुपाद जी his love of Krishna. जो प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है, वही जो है चैतन्य महाप्रभु का फल है, प्रेम फल है। And it's not just Prabhupada saying distribute the books. It's he's saying it because Lord Chaitanya said it. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पुस्तकों का वितरण कीजिए, ये प्रभुपाद जी नहीं कह रहे, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। Now, just to make my previous point,
in the end of the Chaitanya Charitamrita, there's the Shishastak prayers. जो अंत में चैतन्य चरितामृत के जो अंत है उसमें शिक्षा सकम का प्रिय है प्रार्थना है। It says Yugaitam Nameshena. युगा एकदम निमेशेना, And in the word for word, Prabhupada says, appearing like a great millennium. तो बता रहे कि जो हमें बहुत ही लाखों में से हमें जो है वो So, लाखों वर्ष का जो पीरियड है। so we're saying it, but the first translation he gave was 12 years. लेकिन जो पहला जो अनुवाद किया वो 12 साल तक किया है। But now, by the time he's writing Chaitanya Charitamrita, the readers know what a millennium is. लेकिन जब चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद जी So simple, उसमें you know. पता था कि मिलेनियम का मीनिंग क्या है। So here he says, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium. आपसे जो विरह का जो भाव है वो मतलब कितने करोड़ों साल के बराबर है। A millennium, a period of 1,000 years, especially when calculated from the traditional date of the birth of Christ. That's the dictionary. जो मिलेनियम है वो लगभग 10,000 साल को कहता है। Milli means a million. Millennium. Yes, मिलेनियम 10,000 साल का जो समय होता है जन्म से लेकर 10,000 साल का वो विरह है, वो उनसे विरह महसूस कर रहे हैं। So according to time and circumstance, you may जो समय का परिस्थिति के अनुसार translate differently. वो अनुवाद अलग-अलग तरीके से करना होता है। So anyway, the fruits of love of God. Christian Lord Chaitanya is the gardener, but he said he can't do it by himself. He needs help. जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जो फल है वो खुद ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को दिए कि आप जो है किताबों को लिखें और बांटें। So he wants everybody to help him. तो महाराज का अनुरोध है कि आप सब लोग इसमें मदद करें To distribute love of Godhead. ताकि ये जो भगवत प्रेम है इसको वितरण किया जाए। And that's what we say. He's distributing it freely by the Mahamantra, by the Sankirtan. तो वो जो है महामंत्र के द्वारा मुफ्त में सबको बांट रहा है भगवत प्रेम। He's giving it. No one else ever did that. इन्होंने जो दिया है वो कोई और दे नहीं सकता है। Right? So like if you read Prabodhananda Saraswati, अगर आप पढ़ेंगे सरस्वती जी के बारे में, he's what you might call a fanatic devotee. वो बोलते हैं कि वो कोई फैनेटिक है। He says, what's the use of any other incarnation? All they did was kill some demons. तो बहुत सारे जो भगवान अवतार लेते हैं उससे बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं। But Lord Chaitanya gave freely love of Godhead. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुफ्त में सभी को भगवत प्रेम दिए, कृष्ण प्रेम दिए। He also writes about Vrindavan in the same way. इसी तरीके से उन्होंने वृंदावन के बारे में भी लिखा है And Navadvip. और नवद्वीप धाम के बारे में भी। Like unbelievable, claims about the power of these holy places. लेकिन हम लोग को ऐसा एहसास नहीं होता है कि इस जो धाम है, होली धाम है, उसका कितना बड़ा शक्ति है। But they're not exaggerations, it's true. लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि आप बता, लेकिन वो सत्यता है। So Lord Chaitanya becomes, mad in love of Godhead, which that we read at the end of the. वो बिल्कुल पागल है कृष्ण प्रेम में। So towards the end of his time in Puri, then these things would happen. Even early on, as soon as he got initiated, he would exhibit these symptoms, but then he would stop. He didn't want to show off. जब चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हुआ ईश्वर पुरी से, तो उन्होंने बहुत सारे गुण को प्रदर्शित कर दिए, लेकिन उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। But this feelings of separation, the gopis always felt like that. जो गोपियां हैं ब्रज की, वो भी भगवान से विरह का महसूस करते हैं, उसी चैतन्य महाप्रभु भी विरह का महसूस कर रहे हैं। They said Lord Brahma is stupid because he put eyelids, and when we blink, you can't see Krishna. तो बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी ने जिन लोगों को बनाया है, वो
बहुत ही स्टूपिड है वो, क्योंकि हमें अपने जो पत्नी है क्योंकि उसको बंद करना पड़ता है, उसमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। But if someone takes a movie of your eye, we blink a lot, अगर आप constantly. कोई आप मूवीज देखेंगे वहाँ पे हमारी आंखें बहुत ज्यादा फटती हैं, I never noticed. लेकिन हम जो है उसमें नोटिस नहीं करते हैं। But the cowherd boys, the gopis, if Krishna was walking and he went behind a tree, they would just panic because they couldn't see Krishna. जब कृष्ण जो है Or just, ब्रज में जब घूमते थे तो how long does it take to walk past a tree? जैसे भगवान अपने आप को छुपा लेते थे तो कोई गोपियाँ बहुत ही लगता था कि कृष्ण कहाँ चले गए। So Lord Chaitanya, he wouldn't exhibit in public. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आम लोगों को ऐसा कुछ वो लीलाएं नहीं दिखाई हैं। But that's the highest stage. I don't know if any of you have come. I haven't come anywhere near it. Because we have a, ये जो है सबसे ऊंचा स्तर है। Bhagavatam says, a steel-framed heart. If you're not flooding tears out of your eyes and rolling on the ground when you chant, then लेकिन बताते हैं कि जब आप जप करें तो आपको आपके आंखों से अश्रु आना चाहिए और आप जो है जो ब्रज का जो रच है उस पर रोकना चाहिए। but at least we dance. We go out and publicly chant and try to make it heard by as many people as possible. और जितना हो सके आप उतना प्रचार करने में लगे। Of course, some devotees don't quite understand, like it says loud chanting. लेकिन कुछ भक्त लोग जो है वो समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि ये बहुत ही आवाज वाला जप है। But like every word, loud has different meaning. लेकिन हर एक शब्द का अपना अपना मतलब है। In this case, it means so that others can hear it. अगर आप ठीक से उच्चारण करेंगे दूसरे लोग उसको ठीक से सुन सकता है। It doesn't mean that the speaker is up so loud that it's distorting the sound. लेकिन जो स्पीकर है वो बहुत तेज से बोलेगा तो उससे जो है सुनने का जो क्षमता वो खराब होगा। And all the dogs start running away and people go like this. उसके बाद क्या है कि जो कुत्ते हैं वो दौड़ रहे होंगे, लोग अपने कानों को बंद करके चल रहे होंगे। Means it's supposed to be loud enough that people can hear it. इतना होना चाहिए But not, जो अच्छे से प्रेम से not we're trying to break down the buildings. लेकिन इतना आवाज नहीं हो कि जो घर है वो भी टूट के नीचे गिर जाए। Sound is very powerful. जो ध्वनि है बहुत ही शक्तिशाली है। We went in that shop yesterday that has the bowls, the singing bowls. तो अभी कल हम हरिनाम में देख रहे थे कि एक दुकान था जहाँ पे ध्वनि का बॉल था। They make a very beautiful sound and it can actually be used to heal diseases. इतने जो उस बेस से It focuses the mind. आप फोकस करेंगे तो उससे आपकी जो बीमारियां वो भी खत्म हो सकते हैं। Sound vibration. I remember there was one opera singer used to come on television when I was a kid. उसमें बहुत सारी जो मूवीज है उसमें भी दिखाते हैं कि जो ध्वनि है इसका कितना महत्व है। And she would, get a really, really high note, and there'd be a glass, a wine glass, and it would break. तो उसमें क्या है कि जैसे ध्वनि है तो एक शराब का ग्लास था, उस ध्वनि से शराब का ग्लास टूट गया। So they can use sound for so many things. तो ये जो ध्वनि है इससे बहुत जगह इसका प्रयोग देखते हैं। But that's our whole program, is that the sound vibration of the Mahamantra. ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है ये है ध्वनि की तरंगें हैं जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है। Cleanses the heart, purifies the mind, ये हमारे हृदय को पवित्र करता है और हमारे मन को भी शुद्ध करता है purifies the whole atmosphere of the world. और पूरे वातावरण को भी शुद्ध करता है। So we want to spread it as far as possible. हम लोग को इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए जितना मैक्सिमम ये जा सके। In Delhi, you have very good facilities, so many people everywhere. जो भारत में बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारे भक्त हैं। So please continue. कृपया कर आप इसे आगे बढ़ाएं। Because the more we chant, we get more purified, more empowered also. हम जितना जप करेंगे उतना हम शक्तिशाली होंगे, उतना हम जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। And the more we distribute the books also, जितना हम किताबों का वितरण करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। the books are also transcendental sound. जो किताब का जो ध्वनि है वो भी
बहुत दिव्य ध्वनि है। They're also kirtan. जो किताब का वितरण है वो भी कीर्तन है। So that's why, we have this always pushing and Bhadra campaign, and there's Gita, and then there's Chaitanya Charitamrita. इसलिए जो भादों का जो महीना आने वाला है उसमें भादों के महीने में एक स्पेशल हम लोग प्लान करते हैं ज्यादा से ज्यादा किताबों का वितरण हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत लें और पढ़ें। Yeah. Okay, so any comments or questions? इन्हीं का कोई प्रश्न है? Yes. Anyone? So, Prabhu is asking how to develop quality to learn the scriptures like the Prabhupada books, how to develop interest in reading. Associate with people who have interest. आप उन लोगों के साथ रहें जो जिनका रुचि है प्रभुपाद की किताबों के प्रति। Read with others. Read with others who have interest. आप लोग भक्तों के साथ में पढ़ें जिनका रुचि है ग्रंथों में। And keep reading no matter what, because like anything else, लेकिन आप पढ़ते रहें, ये नहीं कि कोई क्या सोच रहा है। आप पढ़ने पे प्रभुपाद की जो ग्रंथ है उसको पढ़ने पे ध्यान दें। I saw an interview with one Mataji. She's like the top violin player in the world. One young devotee girl. एक बहुत ही एक माता जी थे, बहुत ही जवान और वो जो है बहुत ही अच्छा किताब के भजन करते हैं। She has a violin that's worth like, I can't remember. Someone asked, how much is this worth? She said, you could buy many apartments in Manhattan. It's worth many, many millions of dollars. Anyway, I don't know why that somebody loans it to her, the Stradivarius Society, because she's such a good player. It's supposed to be the best violin ever made. And it's worth like so many millions. That's how good player she is. Yes. And she's a young devotee, very young, like 20 something. So she said, her mother was a violin player, and she had to take violin lessons. उसकी जो मदर थी वो जो है बीना बजाती थी। And she hated the violin. She hated it. But they pushed her, you have to play violin. She wanted to play piano. I said, no. उसके बाद फिर वो पियानो बजाती थी। Now she's very thankful she had the strict teachers. लेकिन आज वो बहुत अभागी है कि वो लोगों को सिखा रहे हैं और बहुत सारा लक्ष्मी भी कमा रहे हैं। That Muhammad Ali, he was still considered the greatest boxing champion. एक जो बॉक्सिंग की जो चैंपियन हो क्या नाम? What's the name? Muhammad Ali. मोहम्मद अली जो है वो He's famous in the world. जो है मतलब बॉक्सिंग खेलते हैं। But he said he hated practicing. लेकिन वो बहुत होता था कि मैं हेट करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। And they work like 10, 12 hours a day. तो मोहम्मद अली Just जो है, running 10 and से 12 fighting घंटा प्रैक्टिस करता था डेली। And they have to be very, go to bed early, and no girlfriends, no parties. लेकिन कोई उसके कोई दोस्त नहीं थे और ना ही वो किसी पार्टी में जाता था। And any big athlete, any big musician, they'll tell you, sometimes they hate, but they practice because they'll get somewhere. जो बहुत बड़े-बड़े जो एथलीट्स हैं, जो खेल खेलते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी और बहुत हेट भी करते हैं कि हमें नहीं खेलना, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। So sometimes we like chanting, sometimes we don't. तो कभी-कभी हमें जप करने का मन होता है, कभी-कभी हमें जप करने का मन नहीं होता है। Some devotees get bewildered and they say, well, I don't want to be forced.
I just chant when I feel like it. तो जो जो कुछ भक्त है वो भी जो है भटक जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं उतना बल नहीं लगाना चाहता हूँ जब करने के लिए, They may never chant. तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं। If you only, but we read, we chant, because we know it's purifying and we're going to get, लेकिन जब करते हैं like जब हम says over and over again, पढ़ते हैं तो वो हमें you समझ get आता है। purified. तो जो है It will आपको come. होना चाहिए। Just like if you're walking, you want to walk to somewhere, sometimes it feels like you're never going to get there. लेकिन जब आप कभी चलते हैं तो लगता है कि हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। If you're climbing up to Tirupati or something, जैसे कि आप तिरुपति में चढ़ाई करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है चढ़ाई करना। keep thinking, oh, there's the top, but देखते हैं कि आगे भी कोई है। it's not. You get there and there's another one, another one, another one. तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अंत तक पहुँच जाएंगे। But if you keep walking, you get there. लेकिन जब आप चलते रहेंगे तभी आप पहुँचेंगे। रुक जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे आप। Someone asked me yesterday, how do you keep going for so many years? तो कोई महाराज से पूछ रहा था कि आप इतने सालों तक कैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं? I didn't say at the time, but it's one day at a time. तो महाराज कह रहे हैं कि एक दिन में एक कार्य करना चाहिए। Like there's a society for helping people that are drug addicts or drunkards to stop. एक बहुत संस्था है जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, उनको रोकने के लिए कि आप इसको मत करो। Now there's a devotional section of it, bhakti recovery. अब जो है अब जो भक्ति जो छोड़ के गए हैं उनके लिए भी एक अलग से They use the same, anyway, one of their main principles is one day at a time. Today I will not drink. तो वो बता रहे हैं कि एक दिन में एक नियम लें कि हम आज शराब नहीं पिएंगे। They do that every day. So if today I will read, today I'll chant, today I'll get up. तो मैं उन्होंने If we think I have to do this for the next 50 years, आज हम पढ़ेंगे oh, maybe I'll get sick. What will happen? I might not be able to do it. तो हम But one day doesn't seem so hard. तो हम एक दिन के लिए सोचें कि आज हमें क्या करना है, उसका प्लान करें। One mantra at a time. When they made the japa workshop, जब हम जपा का Satchidanand Swami, one mantra at a time. एक मंत्र एक समय पे। Don't think I have to chant 16 rounds. ये नहीं सोचते कि हमें Gotta सोना do माला this. करना है, बस एक How am I going to एक do समय it? पे। One more, one more, one more. एक करते करते आपको 16 माला हो जाएगा। You're going up the stairs, you might get tired. जैसे कि आपको सीढ़ी चढ़ना है तो आप थक जाएंगे, लेकिन आप- Okay, 10 more steps. 10 steps isn't so hard. One more step, one more. फिर एक-एक करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। So it's just a matter of how we look at things. ये सब दिखता है कि आपका विजन क्या है, आप किस तरीके से किस चीज को देख रहे हैं। It's like reading the Bhagavatam. जैसे कि आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, Vaisheshika Prabhu made that. Be a sage, page by page. तो एसएससी का प्रयोजन लिखा है पेज एक पेज उसके बाद दूसरा पेज। So if you think, I'm going to read the whole Bhagavatam in 1 year, तो इस तरीके से आप पूरा श्रीमद् भागवतम एक साल में पढ़ लेंगे। that's a lot. लेकिन जो पूरा भागवतम बहुत बहुत बड़ा है। But then if you divide it up, how many pages you have to read every day to do that? लेकिन आप जो है डिवाइड कर लीजिए कि आपको एक दिन में कितने पृष्ठ को पढ़ना है, कितने पेज को पढ़ना है। Anyone know? आप में से किसी को पता है? In English, 41. इंग्लिश 41 pages. एक दिन में 41 पेज पढ़ना चाहिए। You read 41 pages every day. You read the whole 41 Bhagavatam. पेज पढ़ना चाहिए। He's got a whole list. You can, the Bhagavad Gita, you read so many pages a day, you read a whole book in 1 year. तो अगर आप Bhagavad Gita is not very पढ़ेंगे, many. तो आपका भगवद गीता भागवतम सब एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। It लेकिन makes it easier. 41 पेज पढ़ना है। So you just keep taking the medicine and it works. और जब आप इस तरीके से दवाई खाएंगे तो आप पे जरूर
का जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगा। But Kali Yuga people, they want a quick fix. लेकिन जो कलयुग में है वहाँ पे लोगों को तुरंत चाहिए। We think we can just download the Bhagavatam or something. लेकिन वो जो है भागवतम को डाउनलोड करके रख लेते हैं सिस्टम में। Like in the movies, just put some helmet on, and then जैसे all of a कि sudden मूवी you've होता है, memorized the जिसमें whole. कोई जो है हेलमेट मान लेता है कि हमें एक्सीडेंट नहीं होगा, No, you just keep reading. इसलिए आप डेली पढ़ें। It may seem like ages, but when Lord Chaitanya, first time he went to Puri, जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए, first time he went to Puri, they were at the river, वहाँ a पे little far away, जो बहुत दूर था, but he could see the top of the temple. लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं मंदिर में तो वो नदी दिखता है। And he just left the group and started running. वो अपने ग्रुप को छोड़ दिए और दौड़ना शुरू कर दिया। But this guy, he was running and running and running, but it seemed like the temple was just getting more far away. He could never get there. दौड़ रहे थे, देखते थे कि मंदिर तो बहुत दूर हो गया, लेकिन तक पहुंचे नहीं है। But he got there. लेकिन फिर पहुंच गए। And when he got there, he fell unconscious. जब पहुंचे तो बिल्कुल ही मूर्छित हो गया। Okay? So find somebody who has a taste and read with them. आप लोगों को ढूंढिए जिनका रुचि हो। And even just by asking that question means you will get it, according to Lord Chaitanya. अगर आप प्रश्न पूछ सकते भी वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। Just by your desire. तो अपने इच्छा को प्रकट कीजिए। But there's no limit to it, to become. लेकिन इसका कोई सीमा नहीं है। All right? Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. To understand Bhagavatam, we need to read Chaitanya Charitamrita. तो एक बार आप भागवतम को समझे, उसके बाद सीधे चैतन्यामृत को पढ़ें। All right? This is a very special place where Prabhupada, he studied Bhagavatam a lot. ये बहुत ही खास जगह है जहाँ पे श्री प्रभुपाद जी भागवतम को कई बार पढ़े हैं। I think his son was saying Prabhupada would study Bhagavatam like 4 hours a day or something. That was before, when he was a householder. भागवतम पढ़ते थे। But he was writing so many hours a day. और उसके बाद कई घंटों तक प्रभुपाद जी जो है उसका अनुभव लिखते थे। So this place is really sanctified. ये प्लेस जो है बहुत ही पवित्र है। Okay? Lord Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Transcendental Gardening ki jai. So distribute these fruits of love of Godhead. Any book, इसलिए आप जो है just the Mahamantra, प्रेम फल है उसका किताबों का वितरण करें prasadam, और प्रसाद भी just meet people, आप लोगों से मिलें talk to people about Krishna, और लोगों से कृष्ण के बारे में बात करें and you'll be pleasing to Lord Chaitanya. और ये जो है चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। Okay, thank you very much. Shri Krishna Chaitanya. For those of you who just came, I don't know if you've been here before. These deities, आप लोग आए हैं, आप पहले यहाँ पे आए कभी? You came? the deities were installed 150 years ago. ये जो विग्रह है ये 150 साल पहले इसका And this whole, all these paintings up here, they're from that time. ये जितने पेंटिंग दिख रहे हैं वो सब उसी समय का है। It's hard to see the top ones, but they're very beautiful. So Prabhupada would come down here for darshan. His room is the next floor. तो प्रभुपाद जी नीचे आते थे दर्शन करने के लिए, प्रभुपाद जी का रूम जो है वो ऊपर है। We read that the day before yesterday. हमने इसके बारे में एक दिन पहले पढ़ चुके हैं। The man who owned the building, Mr. Sharma, जो इस
हेल्प जो इसके मालिक हैं वो है मिस्टर शर्मा। Because he admired Prabhupada's writing just from reading his Back to Godhead. वो श्रील प्रभुपाद जी का जो भगवत दर्शन प्रकटिका पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी को बहुत पसंद करते हैं। He gave Prabhupada this room so that he could concentrate on the Bhagavatam. जहाँ पे प्रभुपाद जी रह सकें और श्रीमद् भागवतम पे And then he took over a lot of the technical work of the Back to Godhead so that Prabhupada could focus on the Bhagavatam, spend more time. तो वो सारे कार्य को भूखे ताकि जो श्री प्रभुपाद जी है भागवतम पे एकांकित होकर के ट्रांसलेशन कर सकें, अनुवाद कर सकें। And then these deities were here before. Ganga Mata and Durga and Shiva Linga, Hanuman. They were all here from the original. यहाँ पे जो डिटीज हैं, जो विग्रह हैं, गंगा माता जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, ये उसी समय से है। So, go upstairs and have a look. One flight up. Thank you very much. Hare Krishna. It's very nice here. I like the devotees here are very nice. Devotees are always nice. जो भक्त है वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। It's nice to see so many young people on the Harinam. बहुत अच्छी लगा कि महाराज ने बहुत सारे लोगों को हरिनाम संकीर्तन में देखे। It's quite a workout. बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। How many miles you walk? कितना किलोमीटर से लेते हैं? 4 किलोमीटर। 4 kilometers. In the hot sun, because the one road we were on most of the time was the sun was right there. Right in my face. Anyway, many people get benedicted. All right. Is this painting from very old one or? Huh? One devotee from Mumbai, he painted. Really? Recently? In Dwarkanath Prabhu from Bombay. Wow. Spectacular painting. Every face is perfect and they're all different. So, really amazing. Yes. Amazing painting. Yeah, एक बहुत ही सुंदर picture है. Yeah, it's amazing. Everyone is so individual. इसमें जितने भी लोग हैं सब अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं. I don't know if he had models and just. Anyways, empowered artists are amazing. जो कलाकार हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं. Mystic power. उनके पास कोई जो है जादू है. Okay. Hare Krishna. So, I had that class at 10:30. So it's only 1 hour. I don't want to say what. Hare Krishna. A lot of thank you, Maharaji. Very nice lecture. I will price it in Mahaprabhu. Importance of Srila Prabhupada books. One time chant the Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sri Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Hidayat Premanande. When you have a microphone, you're not going to don't have a microphone.